Hello everyone, good morning. Welcome to Literature Vidya. I am Ankita and from here we are beginning with the second part of me explaining you Noam Chomsky. We had already understood the concept of the universal grammar, and from this lecture onwards we will be understanding the concept of the E language and the I language. So let's begin. What is a E language and what is a I language? E language, also known as the extensional or external or the non-material language, right? It is also said to be the performance. If we talk in terms of Saussure, Ferdinand de Saussure, so E language is same as the parole. It's the live language, or it's the language in context, or it's the spoken language. Okay, language is the most sophisticated product of human mind. External aspect of language or the spoken form is the parole. It can be radically be different from individual to individual. I language produces the E language, right? क्या कह रहा है कि जो I language है हमारी, उसी की हेल्प से हम E language प्रोड्यूस करते हैं. तो E language क्या होती है? E language जो होती है वो हमारी spoken form of the language होती है, या वो हमारी अगर सुशौर की टर्म्स में बात करें तो वो parole होती है. तो अगर आई लैंग्वेज की बात करें तो आई लैंग्वेज क्या होती है? आई लैंग्वेज बेसिकली लैंग होती है, right? I language can be compared to lang. It's the set of rules, right? It's your linguistic competence. Okay, Chomsky says that competence is innate to all individuals. और वो क्या कह रहा है कि कहीं ना कहीं ये I language तुम innately अपने साथ लेकर आते हो, right? This competence is innate to all individuals. That's what he has said when he presented the concept of the universal grammar. ओके, नाउ आई लैंग्वेज क्या होती है? आई लैंग्वेज हमारी मेंटल लैंग्वेज होती है, राइट? इसको हम कॉम्पिटेंस भी बोलते हैं, कॉम्पिटेंस ऑफ आर लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस. ओके, देन इट इज द इंडिविजुअल्स अप्रोच टू लैंग्वेज. आई लैंग्वेज क्या होती है? ये एक इंडिविजुअल की अप्रोच होती है लैंग्वेज की. इट इज द इंटरनल लैंग्वेज. ओके, आई लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्बल वे ऑफ कम्युनिकेटिंग information that is important to you. Okay, it's basically the language in mind. I language क्या होती है? ये language in mind होती है. Okay, mental and psychological part of language. Language properties like geographical, historical, political, social, family will develop in the mind of the individual. Internal state of mind of the individual, right? So I hope you are clear with the concept of I language or E language. अब क्या कह रहा है ये? Linguistic knowledge in the mind of the speaker is the I language. जो linguistic knowledge एक speaker के mind में होती है उसको हम क्या बोलते हैं? I language. तो I language linguistic knowledge है, एक internal language है, while observation, linguistic output, that is a sentence, a song or text, is the E language. तो I language बेसिकल ग्रामर होती है या लिंग्विस्टिक नॉलेज होती है, वहीं E language जो होती है वो हमारी स्पोकन फॉर्म ऑफ द लैंग्वेज होती है. वो सेंटेंस हो सकता है, वो सॉन्ग हो सकता है, वो टेक्स्ट हो सकता है. E language is the result of the I language. Unless and until you don't have the I language, you cannot have the E language. जैसे unless and until you don't have the lang, you cannot have the parole. Lang is very very important for the production of parole. वैसे ही E language के प्रोडक्शन के लिए I language का होना बहुत जरूरी है. E language does not exist independent of the I language. Okay? Every individual in the language community has a I language. हर individual के पास एक I language होती है. I language is the internal language. It is your linguistic capabilities. It is the rules and regulations that govern a particular language, right? And every individual can produce infinite E languages. उस एक I language से हम infinite E languages produce कर सकते हैं. हर individual की I language almost universal होती है, almost same होती है, और उससे हम contextual languages बहुत सारी प्रोड्यूस कर सकते हैं. उसी तरीके से जैसे जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं, लैंग जो होता है वो सेम होता है ऑलमोस्ट, पर उससे जो हम परोल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं वो बहुत सारी हो सकती हैं. द लैंग्वेजेस इन कॉन्टेक्स्ट दैट कैन बी प्रोड्यूस कैन बी मेनी. तो वो बिल्कुल रेप्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है ये. इट सेज हेंस ई लैंग्वेज इज एपिफिनोमिनल. मतलब ई लैंग्वेज एक सेकेंडरी लैंग्वेज है. अगर हम कोर लैंग्वेज या प्राइमरी लैंग्वेज की बात करें तो वो आई लैंग्वेज है. ओके, ई लैंग्वेज इज आई लैंग्वेज मेड विजिबल. ओके, I hope we are clear now with the concept of E language and I language. Now the next part is
the competence and performance. What is competence and what is performance? It was first introduced by Noam Chomsky as a part of the foundation for his generative grammar, right? This idea of the competence and performance was first introduced by Noam Chomsky as a part of his foundations of the generative grammar. Generative grammar के concept के form में ये पहली बार introduce हुआ था, the concept of competence and performance. So now what is competence? A person's knowledge of his language is the competence, okay? The capacity, right? Person's capacity of knowledge of language. इंसान के पास उसकी language की, उसकी लैंग्वेज के रूल्स की, सिस्टम के रूल्स की कितनी ज्यादा नॉलेज है इज द कॉम्पिटेंस ऑफ द इंडिविजुअल. इट्स द पर्सन्स नॉलेज ऑफ हिज लैंग्वेज, right? That is the system rules to produce infinite number of sentences and recognize mistakes. That's the competence, okay? It's the person's knowledge of his language, okay? वहीं अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस क्या होती है? परफॉर्मेंस इज द स्पेसिफिक अटरेंस प्रोड्यूस्ड बाय द नेटिव स्पीकर. वही परोल. तो अगर हम बेसिक में बात करें तो कॉम्पिटेंस, आई लैंग्वेज और लैंग एक ही बात है, ठीक है? दे आर सिनोनिमस टर्म्स. वहीं परफॉर्मेंस, ई लैंग्वेज और parole, they also hold almost the same meaning, okay? Now the next part is the Cartesian linguistics, term coined by Noam Chomsky in his book Cartesian Linguistics, a chapter in the history of rational thought, 1966. कार्टीजियन लिंग्विस्टिक जो टर्म है वो कॉइन की गई है उसके बुक में, दैट इज कार्टीजियन लिंग्विस्टिक, a chapter in the history of rational thoughts, 1966. Okay, here he says that general feature of a grammatical structure are common to all languages. क्या कह रहा है कि जो general features होते हैं language के, या जो grammar होती है या grammatical structure होता है किसी भी language का, वो common होता है सब languages में. The grammar to any language is almost the same. The features of grammar, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, टेंस, ये जो भी तुम यूज करते हो, जो ग्रामेटिकल फीचर्स होते हैं, ये हर लैंग्वेज में ऑलमोस्ट सेम होते हैं, राइट? द पर्पस ऑफ द बुक इज डीपनिंग our understanding of the nature of language and the mental process and the structure of human language. It is majorly going more into the language and the structure of language and the mental process. And ये binaries का use कर रहा है इस book में to make you understand, जैसे man versus brute, creative aspect of language is only specific to humans, right? तो इस book में ये themes के form में बहुत ज्यादा बाइनरीज का इस्तेमाल कर रहा है, जैसे मैन वर्सेस ब्रूट या डिफरेंट बाइनरीज का इस्तेमाल कर रहा है इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करवाने के लिए कि लैंग्वेज जो होती है वो एक स्पेसिफिक कैपेबिलिटी होती है ह्यूमन ब्रेन की, ओके? देन मूविंग फॉरवर्ड, लैंग्वेज, another book that he has written is Language and Mind, that he wrote in 1968. Remember the name of the book, it has been asked in the exam. Language and Mind एक book है जो उसने 1968 में लिखी थी. It's a book by Noam Chomsky and it is a collection of 3 essays on linguistics. Another book that he has written is Sound Pattern of English, 1968. And this book Noam Chomsky has written with Maurice Helle. Important. Sound Patterns of English एक book है जो उसने 1968 में लिखी है with Maurice Helle. Okay. Then another book that he has written is Reflections on Language, 1965. Here he says that certain specific capabilities are innate as opposed to the imperialist, right? और यहाँ पे वही वाली उसने यूनिवर्सल ग्रामर के आइडिया को ही प्रेजेंट आउट किया है इन द रिफ्लेक्शन ऑन लैंग्वेज 1965 एंड ऑल्सो प्रेजेंटेड हाउ ही इज डिफरेंट फ्रॉम इंपीरियलिस्ट, जो कहते हैं who present you with the concept of tabula rasa. Okay, so Language and Mind, Sound Patterns of English and Reflections on Language, a book written by Noam Chomsky. Sound Patterns of English he wrote with Maurice Helle. Then some of other important books that he wrote in the field of politics are Fateful Triangle, Necessary Illusions and Deterring Democracy. Remember the name of all the 3 of them, they are very important. Fateful Triangle, Necessary Illusions and Deterring Democracy, right? I hope now we are clear
with Noam Chomsky. I will be dealing with Russian formalism in the next class. If you like the video, please hit the like button, share it with your friends, give your important feedbacks. See you in the next class. Study hard.